हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं, लेकिन जो बात आवाज़ की है वो किसी की नहीं है। और यहाँ पे आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज समीना। ये समीना भी आज हमारे साथ है, समीना जबीन। So as some of you may know, my husband Patrick Brown, who is currently the mayor of Brampton, is running to be the leader of the Conservative Party of Canada. It's a pleasure to be with you here today to help you understand the urgency and the need for Patrick to be elected the leader of the Conservative Party. You and I know that the Muslim community in particular has struggled in the past with Conservative governments, and I understand why this has happened. So right now the party is at a crossroads. So right now, the party is at a crossroads. They're not remain contender named He's running a far-right extreme campaign. The people who ran Stephen Harper's campaign, the people who came up with the Niqab ban, the barbaric tip line, those are the same people running the opposition campaign right now. So Patrick has always been on the forefront for faith-based communities. In his most recent works, he rallied the municipal governments across the country behind his fight against Bill 21 in Quebec and donated a total of $2 million. As you may know, Bill 21 is an attack on religious freedom. It says if you wear a hijab, a turban, a cross, or any religious symbol, you cannot be a government worker. And some may say, well, why does the mayor of Brampton care about a bill? Well, why is he fighting about a bill that's in Quebec? Well, Patrick believes that this bill could set a scary precedent, and if the provincial government isn't stopped in Quebec, and if all levels of government don't stand up, we could see this spread across the country. So since Patrick began in politics 22 years ago, he's always been a friend to all minority communities. He's always stood on the right side of condemning hate in all forms, being the first Conservative leader in the country to condemn Islamophobia in the provincial legislature. This leadership race is so important. Whether you traditionally vote Conservative, Liberal, or NDP, you can still vote Liberal or NDP come the general election, but somebody will be winning this leadership race, and right now you have a choice. Should you sit idle without getting involved, we could very well elect a far-right Conservative leader. Or you can let your voice be heard and elect a leader who has always done well by the South Asian community. This leadership race isn't just an election to elect the leader of the Conservative Party, but it very well could be electing the next Prime Minister of Canada. We should all do our part to make sure each party is electing leaders that embody the qualities that we would respect should they become Prime Minister. The worst thing you can do in this leadership race is to not get involved. Right now, Patrick is working very hard to grow the base of the Conservative Party into a multi-faith, multicultural representation of Canada. And I'm here to assure you that Patrick's number one goal is to clean up this party inside and out to ensure respect and equality for all Canadians. You've all worked hard to build this vibrant South Asian community in Canada, and you're now the very successful generation that is carrying out the important task of establishing a real positive influence in the daily lives of Canadians. The only way we can assure that this party will be cleaned up is through the election of the right party leader. The deadline to sign up for a membership in order to vote is actually Friday, so we only have a few days left. After this date, you will not qualify to elect the party leader if you don't already have a membership. It's so important that we get you signed up as members today. It's only $15 to purchase a membership, so please sign up your husband, any children over the age of 14, yourself of course. As a permanent resident, you're still able to vote in the leadership. We're working hard on our outreach to minority groups that have felt alienated for far too long from the Conservative Party of Canada. Let's make history together. We cannot allow the far right to control a major political party in Canada. We as Canadians must stand up and unite and combat hate and discrimination, for second-class citizenship should not exist in this country. But as I mentioned before, it does in Quebec, and we cannot allow that to grow across the country. So I kindly ask you, please, join me. We have these forms here that I'll bring around where you just scan the barcode. It's very simple on your phone. You can just purchase a membership for $15. And together we will change the party into a very inclusive and understanding one that understands the needs of all of your communities in Canada, you know, who have significantly contributed to the betterment of this country. So thank you so much. Assalamu alaikum. Namaste. Thank you so much. I hope
everybody can hear me now. Okay. मैं भूली नहीं थी, लिंक पे याद था, लेकिन मैं चाह रही थी कि बीच में थोड़ा सा इंटरवल आए। तो अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और हमारे पास बीना रिजवी है माशाल्लाह से, ये भी की ओनर भी है, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है बीना रिजवी हमारे साथ माशाल्लाह से, बीना रिजवी। और फिर हमारे साथ जुड़ी है निशी। निशी को आवाज़ आ रही है? निशी तो निशी हमारे साथ है माशाल्लाह से। जीडी का बहुत ज़बरदस्त शो लेके आई है, और अभी मज़ीद लेके आ रही है निशी। यू कैन कम फॉरवर्ड। निशी लेके आ रही है वसीम अकरम। माशाल्लाह से वसीम अकरम मीट एंड ग्रीट लेके आ रही है निशी। तो आई होप आप लोग हम लोग को ज्वाइन करेंगे। निशी कोई डिटेल आई होप कि आप लोग पता चला होगा मेरे इवेंट का। तो जिसने मिस किया वो अब नेक्स्ट इवेंट ना मिस करें। सिर्फ खाली मुसीबत नहीं होगा, मुसीबत के साथ हम म्यूजिकल नाइट भी अरेंज कर रहे हैं, और बहुत मजेदार कोई सिंगर या सिंगर होगी जो आप इंजॉय कर सकोगे इवेंट। तो मुसीबत टिकट के दीवाने भी होंगे, और जो सिंगर या सिंगर आएगी या आएगा उसके भी दीवाने आएंगे डेफिनेटली। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। एंड ऑफ अगस्त हम शो लेकर आ रहे हैं मीट विद वसीम अकरम म्यूजिकल नाइट। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। वंडरफुल पर्सन के साथ मैंने अभी एक इवेंट किया है, मुझे बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर डूइंग समथिंग मोर। और हमारे पास एक और ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, विच इज़ अ क्रूज इवेंट, और आप लोग सब मेरे ख्याल से जानते होंगे उसके बारे में। और वो क्रूज इवेंट होने जा रहा है, और आप लोग मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। वो क्रूज इवेंट लेके आ रही है सोमी अली और सुमी खान और शगुफ्ता जी, जिनको मैं शादी के नाम से सेव किया हुआ है अपने फ़ोन में। शादी और सुमी लेके आ रही है, तो ये आपको अपने उसके बारे में बताएं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स हियर। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्रूज लेके आ रहे हैं जुलाई 1 को, विच इज़ ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट गाइस। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है। जुलाई 1 का हमारा इवेंट फुली सोल्ड आउट है। टिकट हमारे पास अभी नहीं है। वी आर ट्राइंग टू गेट अ बिगर बोर्ड। अगर आप लोगों में से किसी को भी इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर फेसबुक पे ऑलरेडी फॉलो कर सकते हैं। सुमी खान 647-827074। एंड हमारी जो शगुफ्ता असद हैं वो कुछ कहें। आप लोगों को कार्पेट के ब्रांड कुछ भी पॉसिबल नहीं, जल्दी से सब शुरुआत आप लोगों ने इतना अच्छा साथ दिया, साथ लेके चले, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, कीप लविंग अस। डिलीवरी गुडीज, क्योंकि खाने का टाइम बहुत कम रह जाएगा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी काम करें, और फिर उसके बाद हम खाने की तरफ चलें। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बास्केट्स हैं, ये है वो है, लेकिन जैसे आपको बताया कि मेरे इवेंट में कुछ सुपर डुपर तो होता ही है। इसकी गवाह सदफ बैठी है हमारी माशाल्लाह से। तो इस दफ़ा सदफ, गुड लक टू यू वंस अगेन। 2.5 ग्राम का गोल्ड बिस्किट हम देने जा रहे हैं, और 2.5 ग्राम का ये गोल्ड बिस्किट जो है ये किसके निकलेगा ये हमें नहीं पता है। आप लोगों को गुडीज मिलेंगे, किसी एक गुडी में मेरा विजिटिंग कार्ड है, किसी एक गुडी में मेरा विजिटिंग कार्ड है, और बाखुदा मुझे भी नहीं पता कि किस में है वो विजिटिंग कार्ड। लाइक मेरा बिजनेस कार्ड है उसमें, ठीक है। और आप सबको जैसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं किसका निकलता है, ठीक है। हाँ, गोल्ड कॉइन है 2.5 ग्राम, ठीक है। वो आप अपने साथ लेके जाना है, वो मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट। अब देखो किसको निकलता है। नहीं, वो नहीं है, नहीं, अगर थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू एवरीबॉडी। तो क्योंकि कुछ
बैग ले आओ, वहाँ से हाँ बैग ले आओ, पहले बैग वाला नीचे से बैग वाला। हाँ जनाब, तो ये गुडी बैग जा रहे हैं आप लोगों को मिलने। आपने इसमें ढूंढना है जिसको मिलेगा गुडी बैग। तो ये मैं माइक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, किसको कौन लेना चाहेगा ये माइक? क्या जीजी की फॉलो अप कर रही हूँ। जीजी ने बहुत अच्छे वर्ड्स अभी आपको पेश किया मेंबरशिप के बारे में। इस वक्त बहुत critical leadership race हो रहा है, so don't confuse it with the provincial elections। उसके लिए तो वोट आप लोगों ने डालनी है। इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहा है, इस वक्त सिर्फ पैट्रिक ब्राउन की लीडरशिप के लिए वो रेस हो रहा है। तो उसके लिए आप लोगों ने कॉम्पिटिशन साइन करनी है। ओजीएल भी ऑरेंज किया है, तो हम लोग आप लोगों के पास जाके आप सिर्फ इसको स्कैन करना है फोन के साथ। सबके पास फोन है, उसको स्कैन करके उसको फिलअप करना है एंड इसी तरह फिर आप पैट्रिक ब्राउन को सपोर्ट कर सकते हैं। पैट्रिक ब्राउन ने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत खड़े हुए हैं, बहुत मार खाई है, तो इस वक्त हमारी ज़रूरत है उनको, तो प्लीज़ साइन अप। था